Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Welcome back to your computer class. I'm your instructor Anika Muzammil. I hope you all are doing well and having a good time with the online teaching because it's almost a habit now. So let's start our today's lecture. We are proceeding with chapter number 3, and that is input and output handling, and this is your lecture number 2 from the chapter number 3. In previous lecture we have studied about the uh, input and output handling, in which we practiced the program and using both functions like for input and output. But today's lecture is gonna be a bit different, and we will also perform some practical task. That is going to be an activity, the creative activity obviously, and you have to perform the practical by yourself as well. So let's start with today's lecture. Let me tell you here, like what we are going to learn today. We will learn about statement terminator. Most of the content from today's lecture is being already discussed. Like, you have an idea. If you have watched the previous lecture, then you must have an idea of what we are going to learn today. Like, it would be a revision actually with a bit more detail. So we will learn about statement terminator, as you all know what it is. Then we will know some more format specifiers. Currently, or up till now, we have only figured out only one format specifier, that is %d. And I have told you in previous lecture that in next class we will learn more format specifiers for different data types. So we are going to learn them, and we are going to know some more escape sequences, just like the backslash, and that was used for next line. So there are more escape sequences for different purposes, and we are going to learn them, and we will see their practical work as well. So let's start with statement terminator. As you all know, it is a semicolon symbol that is entered after every statement in C language. Every program written in C language, every statement contains in that program must have this semicolon at the end of that statement. Otherwise it will give you a syntax error. It actually indicates that the statement has been ended, right? When the compiler goes to this sign, compiler gets a message, compiler understands that the statement ends here. So statement terminator ends any statement in C language. If you write semicolon, or if you miss writing this colon, then you must get a error. So you must make this habit by ending every statement with a semicolon. Okay, what is format specifier? As we all know, it is a computer code that tells about the data type or the field with. Obviously, the data type is every data type has a specific field with. If you know about integer, it has 2 bytes field width. Then if you know about long integer, it has I guess or unsigned, it has multiple 4 or 8. If you know about float data type, it contains 4 bit of your memory, which is filled with of that data type. That means it can store up to this much addresses in this memory. So format specifier defines it basically tells about the data type of that particular variable or that particular constant, like which value is to be printed or read from the input device. So here is a list of format specifier. Up to now we only knew about one format specifier, that was %d, which is used for decimal integer. Okay, if in the normal integer that we use, the data type we use int is basically decimal integer. For that you use %d. The I integer is used for long integer, right? The I integer, the percentage I sign is used for long integer. If you have declared a variable with data type long integer, right? If you have declared a variable, let's suppose variable x, and its data type is not integer but long integer, then you must use %I if you want to display or if you want to take input of that variable, right? And if you are using long decimal integer data type, then you must use percentage id. Let me highlight these with the laser pen so that you can know where point we are at.
So percentage id is for long decimal integer. That means your variable's data type is long decimal integer. Okay, next comes about the floating point. What if we have a float data type? Then for that you must use percentage f decimal for format specifier, sorry. And you, if you have for floating point and if you want to display that rational number in an exponential notation, then you use percentage e. Normally we only use this one, like percentage d and percentage f, and in case we are taking any character, then we will use percentage c. So these three is format specifier most commonly used. The other are for the other data types that are being discussed in chapter number 2, right? In chapter number 2's last topic was about data types. So these are all the format specifier for respective data types. And if you are using a character data type where you can only enter a single character, for that you have to use format specifier, which is percentage c. We will also see, look at the practical work of these format specifiers. Here you can see percentage d, percentage id, and percentage I both are used for integer, but percentage d is used for to read a print a decimal integer. Percentage I is used, percentage I d is used for long integers, and percentage I is used for long integer, percentage id for long decimal integer, and percent, these two basically are used for long integer, and this is used for only decimal integer, and this one is most commonly used in format specifier that we normally use in programming language. So we will stick to it. We just wanted to clear how many specifier we basically have. So for long decimal integer we use percentage id, for long integer we use percentage I, and for simple decimal integer, like without any keyword of long or unsigned or signed, we use percentage d, which is most commonly used format specifier in C language for integer values. Okay, here is a practical activity. I'm not going to write the whole program because it got no complication in it. It is very easy program. Here you can see what you have to write here is int, and you have to leave this space empty, and you have to write here return 0, and you have to write the same code this one as it is, right? Then you will get to know like what kind of function it has. It basically differs nothing but the use of multiple these integer specific format specifier, like percentage d for decimal integer, percentage I for long integer, and percentage id for long decimal integer. If you enter a long value against these variables with whom you are using this specific format specifier, it will definitely represent the whole value in front of you. So you have to practice this program by yourself. It got nothing more and nothing any complicated or any difficult. So you just have to write this program in your computer system, and you will get to know the output of this program. Okay, the next one is floating point format. Obviously, we have a floating point data type in the form of variable and constant. So for floating point form data types, we use floating point format specifier. There are two types of floating point format specifier: percentage f and percentage e. For simple floating decimal value, for simple floating point decimal value, you will use percentage f, and to display that value in exponent form, you use percentage e. You better know what an exponent form is in mathematics, but we will also do an activity of this specifier basically, because we haven't used percentage f before than that. Obviously we have worked with percentage d, which is your integer format specifier, but we haven't seen any example with floating point format specifier. So we will look for an example of these for an activity of these format specifier. So percentage f is used for
decimal notations, and which basically has a length of carrying 6 digits after decimal, whereas percentage e is used for exponent notation. So let's see what it has. Here is a program given in your book which displays, which takes two values. It doesn't take these value from user, it basically assigns these value at the declaration time, and it displays the value with these two specifiers. So let's see how let's see how it program turns out. So for that we have to go for dev c++. I have already written this program in this window so that it can save the time. If you want to, then I can write the whole lines, but it would result as the same as written on the screen. Here you can see we have taken two variable x and y with the data type float. That means they will contain floating values, decimal value, floating decimal value जिसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अच्छा प्रोग्रामिंग में बच्चों एक चीज ये भी है कि आप तो scanf फंक्शन यूज करते हुए यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं। इफ यू डोंट वांट कि यूजर कोई वैल्यू एंटर करे, आप चाह रहे हो तो आप खुद से कोई वैल्यू उसको असाइन कर दें ड्यूरिंग प्रोग्राम जब लिखा जा रहा है, तो आप इस तरीके से उन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर उनको डिक्लेयर किया और नीचे मैंने x इज इक्वल टू 3.1, दैट मीन्स x हैज बीन असाइंड द वैल्यू विच इज 3.1, और y को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 2.3। अगर हम सिंपली अब देखें x की दोनों की डेटा टाइप फ्लोट है, बट वी आर यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। वी आर यूजिंग परसेंटेज f for x to display data in decimal notation, and we are using percentage e to display data in exponent notation. So let's see how it differs from the percentage f, like the percentage e, how differs it from percentage f format specifier. So let's execute this program. Click on execute and compile. Yes. Okay, there are no errors in it. That means program is ready to run, and we have run the program. Here you can see x is equal to 3.1. we have discussed कि decimal point के बाद 6 values आती है, तो उसने 6 values को ही display किया। 1 तो already आ रहा था, आगे 5 वैल्यूज, जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ 3.1 वैल्यू एंटर की थी, आगे मजीद 5 डिजिट्स आ सकते थे, उसने उसको 5 डिजिट्स जो है वो खुद से 0 एंटर कर दिए हैं। एंड द अदर वन इज y इज इक्वल टू 2.3 e plus 00. Here you can see, here this is the exponent notation, राइट। 2.3 को उसने इसके आगे ये जो एक्सपोनेंट नोटेशन के अंदर जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। सो दिस इज हाउ फॉर्मेट ऑफ आउटपुट चेंजेस इफ यू यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर। दोनों फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, लेकिन एक डेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट करता है और दूसरा एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरीके से जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप लोगों को बच्चों एक चीज नजर आ रही होगी कि दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो एक ही लाइन में लिखी हुई नजर आ रही है, जैसे ठीक है एक्स भी उसी लाइन में है, अब वाई यहीं से इसके साथ स्टार्ट हो रहा है। तो हमें नहीं देखो अब मैंने प्रोग्राम लिखा है तो मुझे तो पता है कि 2 वैल्यूज हैं। अगर कोई और प्रोग्राम देखता है दैट इजंट एनी गुड, इट्स नॉट एनी गुड लुकिंग, लाइक इट्स नॉट एनी क्लियर इन रीडिंग। आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है जिससे आपको पता लगता है। सो टू अवॉइड सच थिंग वी यूज एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने बैक स्लैश एन अगली स्लाइड में होगा, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे इसकी वर्क दिखाना चाह रही हूँ। अगर यहाँ पे मैं जो y x वाली तो पहले लाइन में ऑब्वियसली आएगी, अब जो y वाला जो है, ठीक है, जो y डिस्प्ले हो रहा है वहां पे अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश n, तो उससे क्या होगा, मैं इसको सेव करती हूँ, ठीक है। हमने बात की थी ना जो कंट्रोल स्ट्रिंग है उसके अंदर आपके पास जो है वो एस्केप सीक्वेंसेस भी आते हैं, स्ट्रिंग भी आती है और टेक्स्ट भी आता है, और उसके साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये जो बैक स्लैश है ना, दैट इज योर एस्केप सीक्वेंस। अब देखते हैं इससे क्या फर्क होगा। कंपाइल एंड रन करते हैं, ठीक है, उसको हमने रन किया। ओके, वेयर इज द विंडो, हियर इट इज। अब देखिए y आपके पास नेक्स्ट लाइन पे मूव हो गया, प्रीवियसली वो आपको एक ही लाइन पे शो हो रहा होता है। सो दिस इज हाउ आउटपुट चेंजेस इफ यू यूज एस्केप सीक्वेंसेस। तो बैक स्लैश लाइन इज यूज्ड टू मूव टेक्स्ट ऑन टू दी नेक्स्ट लाइन। बैक स्लैश एन के बाद जो भी टेक्स्ट लिखा होगा आपके पास नेक्स्ट लाइन पे शो होगा। ये कॉन्सेप्ट आपके पास अगली स्लाइड में है, बट आई सो वांटेड टू मेक इट क्लियर बिकॉज यहाँ पे वो एक ही लाइन पे लिखा हुआ टेक्स्ट नजर आ रहा था। तो आई होप कि आपको एस्केप सीक्वेंस की भी समझ आ गई होगी फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास था फ्लोटिंग पॉइंट सीक्वेंस।
ओके, लेट्स गेट बैक टू दी लेक्चर फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। सॉरी, रिकॉर्डिंग करते हुए पता नहीं लगता कि आप क्या कुछ बोलते जा रहे हैं। पार्डन मी इफ आई हैव यूज्ड एनी रॉन्ग टर्म, तो आप लोग खुद भी कॉमनली उसको गेस कर लिया करें, ठीक है। ओके, हम लोगों ने जी ये तो एग्जांपल देख ली है, ठीक है। हमने जो है वो दोनों स्केप सीक्वेंसेस जो फ्लोटिंग पॉइंट वाले थे उन दोनों को देख लिया है। अब आ जाते, देखिए हमने हमारे पास डेटा टाइप्स में जो वेरिएबल कांस्टेंट थे उसमें इंटीजर भी थी, इंटीजर डेटा टाइप था, ठीक है, था ये थी जो भी था। ओके, इसके बाद हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप भी थी, और हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप भी थी उसके अंदर, ठीक है। देयर वर 3 बेसिक डेटा टाइप्स, उनकी फिर आगे से हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन थी। तो डेसिमल के लिए तो हमने देख लिया, इंटीजर के लिए सॉरी परसेंटेज डी है, परसेंटेज आई है, परसेंटेज आई डी है। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमने देख ली परसेंटेज एफ एंड परसेंटेज ई। नाउ द वन which is left is character. So for character format specifier indicating its name, we use percentage c for character format specifier. Percentage c is used when you read or print a single character. तो उसके लिए आपको, जैसे इंटीजर के लिए इंट डेटा टाइप थी, फ्लोट के लिए फ्लोट डेटा टाइप थी, तो कैरेक्टर के लिए क्या डेटा टाइप होगी, चार डेटा टाइप होगी। क्या पूरा हम कैरेक्टर नहीं लिखेंगे, बट दैट इज द फर्स्ट 4 वर्ड ऑफ कैरेक्टर विच इज चार। सो वी यूज चार डेटा टाइप। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक सिंपल प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर देखिए चार है। अब यहाँ पे ना ही इंटीजर डेटा टाइप है और ना ही फ्लोट है, सॉरी, ना ही इंटीजर डेटा टाइप है ना ही फ्लोट है। कौन सी डेटा टाइप है, चार, और उसने दो कैरेक्टर डिक्लेयर किए हैं। उन दोनों कैरेक्टर को वो यूजर से उनकी वैल्यू ले रहा है और उनको डिस्प्ले कर रहा है। इस प्रोग्राम को भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। इसी प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, ये वाला हम प्रोग्राम रेस कर देते हैं जो कि फ्लोट वाला था। अच्छा, अब हमने कैरेक्टर लेना है, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, रिमेंबर कैरेक्टर है तो चार डेटा टाइप होगी, फ्लोटिंग वैल्यू है तो फ्लोट डेटा टाइप होगी, इंटीजर वैल्यू है तो क्या होगी डेटा टाइप, इंटीजर। अब हम कैरेक्टर ले रहे हैं A to Z कोई भी कैरेक्टर, ठीक है। तो हम दो कैरेक्टर ले लेते हैं C1 और C2। आप कैरेक्टर्स के कोई भी इनके नाम रख सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल नेम इनका कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी कांस्टेंट, इट कैन बी वेरिएबल। ओके, अब हमने क्या करना है, हम कहते हैं प्रिंट एफ, यूजर से कहते हैं एंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर, कैरेक्टर, ओके, सॉरी, ठीक है। तो इनपुट के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, स्कैन एफ, ठीक है। उसके लिए स्कैन एफ में आप सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा जो कि कैरेक्टर के लिए क्या है, परसेंटेज सी। उसके बाद क्या आएगा, कोमा और एम्परसेंड साइन के साथ C1। हम पहले कैरेक्टर की वैल्यू ले रहे हैं, पहला कैरेक्टर जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया वेरिएबल वो क्या है, C1। ओके, फिर अब हम कहते हैं प्रिंट एफ, ये किधर चला गया है, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ second character. Okay, then what we are going to use for taking input, we will use scanf function obviously, and first of all we will write the format specifier in inverted commas, and then we will write the character, the variable for whom we are taking the value from user with ampersand sign, and we will just end that statement with the statement terminator which is semicolon. Okay, the values, though both values are being taken from user. Now we will simply display these values on screen. Printf the value of C1 is equal to, यहाँ पे भी हम परसेंटेज C यूज करेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे तो हमने वो लगाया ही नहीं, इन्वर्टेड कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर चीज लिखनी है, अदरवाइज इट विल गिव यू एन एरर, क्योंकि आर्गुमेंट तो है नहीं। तो x, ओके, द वैल्यू ऑफ सी, अच्छा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अब हमने C1 की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया, कॉमा लगाया और C1 लिखा, अगेन कॉमा लगाया। इसी स्टेटमेंट को के अंदर जो है वो हम इन्वर्टेड कॉमास लगा के दूसरी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ C2 इज इक्वल टू, ये देखिए एक ही स्टेटमेंट में हम लोग दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू, अगेन वी विल यूज परसेंटेज सी, जो यहाँ पे कैपिटल सी यूज हो गया है, स्मॉल सी, ओके, कॉमा लगाया, ठीक है, और C2,
लेट्स एंड दिस एंड सी व्हाट इट हैज फॉर अस। ठीक है, हमने प्रोग्राम लिख लिया, अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट। ठीक है, कंपाइल के ऊपर गए, इसको हमने कंपाइल किया, सी देयर आर नो एरर्स लकीली एंड नाउ वी विल रन द प्रोग्राम। ओके, एंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर, मैंने ए एंटर किया, एंटर वैल्यू ऑफ सेकंड कैरेक्टर, C1 इज ए। ओके, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास उसने सेकंड कैरेक्टर की वैल्यू को नहीं लिया है। आई गेस लेट्स कंट्रोल एक्स, इसको हम जो है वो दूसरी स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। समटाइम्स आपके पास डेव सी प्लस प्लस अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है, सो डू नॉट वरी अगर ये आपके पास कोई मसला करता है। मैं अभी काफ़ी देर से इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये जो है वो कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ जो है वो उसके साथ गड़बड़ चलती होती है। जब आप एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम्स एडिट करें ना, तो फिर मोस्टली आपके पास ये मसला होता है। ओके, लेट्स सी इफ आई हैव स्कैन एफ भी सही लिखा हुआ है, ये दूसरा कैरेक्टर क्यों नहीं ले रहा है, परसेंटेज डी। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट कंपाइल, हियर देयर इज नो एरर एंड अच्छा, यहाँ पे हम ना इज इक्वल टू का साइन भी लगा लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि कहाँ से कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके, execute compile, yes there are no errors, so let's run this program. Enter value of first character a, enter value of second character is equal to the value of c is equal to a and okay। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई मिस्टेक आ रही है। आई गेस क्या मिस्टेक आ रही है, there must be some mistake, I just can't figure out। ओके बच्चों, आई डोंट नो, सॉरी, एग्जीक्यूशन में मसला है कि वो सेकंड वेरिएबल की सेकंड कैरेक्टर की वैल्यू नहीं ले रहा है। प्रीवियसली व्हेन आई प्रैक्टिस द सेम क्वेश्चंस इसी प्रोग्राम के ऊपर, इसी विंडो के अंदर मैं एडिटिंग करी तो उसकी वैल्यू को वो ले रहा है। सो द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इज द यूज ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल विद द इट्स फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे हम लोग इंटीजर वैल्यू के साथ काम कर रहे थे तो उसके लिए परसेंटेज डी यूज हो रहा था, ठीक है। और अगर हम लोग कैरेक्टर के साथ जब काम करेंगे तो उसके लिए हमारे पास परसेंटेज सी यूज होगा, परसेंटेज सी इज फॉर कैरेक्टर। और कैरेक्टर के लिए हमारे पास डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, 4 डेटा टाइप होगी। फ्लोट के लिए जैसे फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोट होती है, इंटीजर के लिए इंटीजर होती है। तो इंटीजर का डेसिमल हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज डी। फ्लोट का हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज एफ। और इसी तरीके से हमारे पास कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज सी। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक दीज, यू कैन यूज दीज फॉर्मेट स्पेसिफायर अकॉर्डिंग टू देयर डेटा टाइप्स। आप लोगों ने ये एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है। आई होप यू विल गेट द प्रिसाइज रिजल्ट्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस जैसे आपको मैंने बताया है कि हमारे पास आउटपुट के लिए यूज होते हैं, आउटपुट फंक्शन के अंदर यूज होते हैं टू अमेंड द आउटपुट के। आपके पास जो है वो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट किस फॉर्म में शो होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें स्पेशली, जैसे अगर हमने कोई चीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखनी है तो उसको हम कैसे डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन के ऊपर, मतलब कि आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में वो लिखी भी आनी चाहिए। तो उसके लिए या नेक्स्ट लाइन के लिए या कहीं पे बीप साउंड प्रोनाउंस होना है, कोई ऐसी आउटपुट हो जिसके ऊपर बीप साउंड प्रोड्यूस हो, या हमें एक ही सेंटेंस के अंदर मल्टीपल टैब्स चाहिए। आप बेशक कोड के अंदर स्पेस देते रहो ना 2 वर्ड्स के बीच में, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो स्पेस को काउंट नहीं करेगा। फॉर दैट यू हैव टू यूज एस्केप सीक्वेंसेस। तो हमारे पास ये आउटपुट के लिए प्रिंटिंग, आउटपुट प्रिंटिंग के लिए या फिर आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए एस्केप सीक्वेंसेस यूज होते हैं। ये प्रिंट नहीं होते, राइट। जिस तरीके से आपके पास इन्वर्टेड कॉमर्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने से प्रिंट नहीं होते, इसी तरीके से एस्केप सीक्वेंसेस भी प्रिंट नहीं होते। और इनको कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर यूज किया जाता है। कंट्रोल स्ट्रिंग किसके अंदर आता है, प्रिंट एफ फंक्शन में। प्रिंट एफ कौन सा फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है। इसके साथ जो वर्ड यूज होती है, स्लैश यूज होती है, दैट इज बैक स्लैश। बैक स्लैश के साथ जो भी लेटर लिखा होगा दैट इज योर escape sequence. Backslash is also known as the control character. So let's see how many escape sequences we have. There are 1 2 3 4 5 6 7 and 8 escape sequences. There is one more which is included in practical, वो भी आपके पास मौजूद है। तो basically 9 escape sequences हैं। अब हर escape sequence का particular meaning है। जैसे backslash a है, it produces a alert sound,
ठीक है, ये इसका हम प्रैक्टिकल अभी करके देखेंगे कि लाउड साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। बैकस्लैश बी जो है वो कर्सर को वन पोजीशन बैकवर्ड मूव करता है। लेट सपोज अगर मेरा कर्सर एन के ऊपर है ना, तो वो एन से एक कैरेक्टर पीछे यानी ओ के ऊपर लेट सपोज वो ले जाएगा, अगर यहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद है, ठीक है। या अगर ई के ऊपर कर्सर मौजूद है तो वो ई से पीछे एन के ऊपर उसको कर्सर को ले जाएगा। सो दिस इज हाउ बैकस्लैश बी वर्क्स एज एन एस्केप सीक्वेंस। बैकस्लैश एन का भी आपने प्रैक्टिकल देख लिया, ये क्या करता है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है, जो उसके बाद जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको भी ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। बैकस्लैश आर मूव्स कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन, जो करंट लाइन जिसके ऊपर अभी कर्सर होता है उसके स्टार्ट में कर्सर को ले जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज कर्सर यहाँ एंड पे, मोस्टली लाइन के एंड पे शो हो रहा होता है, तो जो करंट लाइन जिसके एंड पे वो शो हो रहा है, तो अगर बैकस्लैश आर आपने वहां पे यूज किया तो वो क्या करेगा, उसको स्टार्ट में ले जाएगा। बैकस्लैश टी इज यूज टू फॉर टैब्स, ठीक है, मुख्तलिफ वर्ड्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं उसके लिए यूज होता है। अगर आपने बैक स्लैश प्रोड्यूस करनी है, आप चाह रहे हैं कि आउटपुट में बैक स्लैश लिखी हुई नजर आए, तो उसके लिए आप डबल बैक स्लैश यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप कोई चीज सिंगल कोट्स में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंगल बैक स्लैश के साथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, और अगर आप डबल कोट्स में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो बैक स्लैश के साथ आप उसको डबल कोट्स लिखकर लगाएंगे पर्टिकुलर टेक्स्ट को। सो दिस इज हाउ एस्केप सीक्वेंसेस वर्क। एंड हियर इज एन एग्जाम्पल, बड़ी प्यारी सी एग्जाम्पल है, आपके पास सारी प्रिंटफ की स्टेटमेंट से कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने टेक्स्ट को उठाया, उसको कॉपी किया, टेक्स्ट को उठाया, उसको कॉपी किया, उसको एज इट इज लिखा, ठीक है। प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन में क्योंकि यूज होती है, इनपुट तो हम यहाँ पे ले नहीं रहे, तो इनपुट का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो प्रिंटफ जो आउटपुट एस्केप सीक्वेंसेस है वो आउटपुट के लिए यूज होते हैं, दे विल डेफिनेटली बीइंग यूज्ड विद द प्रिंटफ फंक्शन। सो हम इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिकल एक्टिविटी देख लेते हैं। ऑल्दो डेव सी प्लस प्लस का मूड नहीं है कि काम अच्छे तरीके से हो, बिकॉज आई एम यूजिंग इट फ्रॉम ऑलमोस्ट 2 आवर्स, ठीक है। तो इस वजह से डेव सी प्लस प्लस इज अ बिट टायर्ड जस्ट लाइक मी, सो इट डजंट वांट टू वर्क, लेकिन हम इसको फिर भी थोड़ा चलाने की कोशिश करते हैं। ओके, फाइल के ऊपर जाएंगे, न्यू के ऊपर जाएंगे, और प्रोजेक्ट के ऊपर कंसोल एप्लीकेशन सी प्रोजेक्ट। ओके, इसको हम देते हैं एस्केप सीक्वेंसेस का नाम, एस्केप सीक्वेंसेस। ओके, यहाँ से हमारे पास जो डेटा होगा उस सारे को क्या करेंगे, उड़ा देंगे, जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ वी विल राइट द स्टेटमेंट। हम यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे विच इज हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद क्या लिखते हैं, सॉरी, मेन फंक्शन, ठीक है, इंट मेन। उसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शन की बॉडी, एंड नाउ वी विल जस्ट राइट द प्रिंट स्टेटमेंट्स, ठीक है, प्रिंट एफ। अच्छा, इसके साथ हम ना पहले बीप साउंड वाला कर लेते हैं। बैकस्लैश था ना, कौन सी स्लैश थी, बैकस्लैश ए। ओके, दिस इज used to produce beep sound। ओके, हम इसको क्या करते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर से स्टेटमेंट को एंड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, एक एक को करके करते हैं, ठीक है, रिटर्न 0 और सेव, ठीक है। मेन फंक्शन के साथ इसको सेव करते हैं, ओके जी, रिप्लेस कर दो। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट, देयर इज लकीली नो एरर ऑब्वियसली। अब हम इसको रन कर लेते हैं। सी, यू कैन सी, जो ही ये हमारे पास रन हुआ तो आपके पास एक जो सिस्टम की साउंड सेट हुई भी है वो उसकी आवाज आई है। दोबारा से इसको रन करते हैं, देखिए, दिस इज द साउंड दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड यूजिंग बैकस्लैश ए। एक दफा फिर देख लेते हैं, एग्जीक्यूट एंड रन। सो दिस इज हाउ बीप साउंड इज। अब अगर हम इसको करते हैं 2-3 दफा इस एस्केप सीक्वेंस को लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब 4 दफा लिख लिए, कंपाइल करके इसको हम कर लेते हैं रन। ओके, एक ही दफा हो गई, ठीक है जी। एस्केप सीक्वेंस में आपके पास जो है वो एक ही दफा ये चीज काम करती है, ताकि अगले बंदे का दिमाग भी काम करता रहे। ओके जी, हमने देख लिया बैकस्लैश ए का। अब हम अगला देखते हैं, अगला हम स्लाइड पे देख लेते हैं। अगला एस्केप सीक्वेंस कौन सा था हमारे पास, दैट वाज बिटवीन द बैकस्लैश बी। हम इसका काम देख लेते हैं, बैकस्लैश बी का क्या काम है, या हम जैसे टैब्स हो रहा था उसका देख लेते हैं, दैट इज इंटरेस्टिंग। तो हम बैकस्लैश
अच्छा, बैकस्लैश एन को तो पहले यूज करें ताकि हमारे पास अगली लाइन इसी के साथ से स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। दिस इज यूज टू एड स्पेसेस बिटवीन टू वर्ड्स। अब वो कौन सा है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं बैकस्लैश टी, मैं अपना ही नाम लिखती हूँ अनीका, और फिर लिखती हूँ बैकस्लैश टी मुज़म्मिल। लेट्स सी हाउ मेनी स्पेसेस इट हैज। ओके, सेव कर लेते हैं और इसको हम ओके हमने इसको सेव किया, कंपाइल नहीं किया, कंपाइल रन। ओके, अब ये देखें जी, बीप साउंड में प्रोड्यूस हो रहा है, ये बैक स्लैश एन से ये लाइन नेक्स्ट लाइन में चलेगी, और यहाँ पे देखें टैब यूज किया तो उसने पहले यहाँ पे इतनी स्पेस थी, अगेन टैब यूज किया बैक स्लैश टी तो उसने इतनी स्पेस जनरेट की है दो वर्ड्स के बीच में। सो दिस इज हाउ बैक स्लैश टी इज यूज। अगर अब मैं चाहती हूँ ये जो अनीका मुजम्मिल है ना, ये मेरे पास इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाए, ठीक है, तो मैं इसको भी लिखती हूँ। अब ना मैं बीच में से ये वाला टैब हटा देती हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ अनीका मुजम्मिल मेरे पास इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, उसके लिए क्या होगा, बैक स्लैश इन्वर्टेड कॉमर्स एंड automatically generate कर देता है, and I don't know if it is used for once, I guess इसका क्या था, okay, used for once, let's see, execute, compile and execute and run. Okay, now you can see the word अनिका के ऊपर सिर्फ आया, यहाँ पे भी हम इसके साथ भी लिख लेते हैं भाई कि यहाँ पे भी या एक इधर इन्वर्टेड कॉमा ऐड करके देखते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल, ओके रन। No, it means you have to, ओके मुजम्मिल भी हमें इन्वर्टेड कॉमर्स में चाहिए तो उसके साथ भी हम बैक स्लैश और एनी वर्ड दैट यू वांट टू राइट इन इन्वर्टेड कॉमर्स, तो आपको फिर जो है वो इस तरीके से लिखना पड़ना है, ठीक है। कंपाइल कर लेते हैं और हम उसको, कंपाइल हो गया और इसको हम कर लेते हैं रन, ठीक है। अब देखें और मुजम्मिल को भी उसने इसी तरीके से जो है वो लिखा है। सो दिस इज हाउ, जहाँ पे आप इसको यूज करेंगे वहां पे आपके पास जो है वो इन्वर्टेड कॉमास इंसर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम इसको यूज करते हैं तो अब आई गेस वो अनीका मुजम्मिल ही पूरा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हो जाएगा, ठीक है। सी दिस इज हाउ यू कैन अमेंड योर आउटपुट on your screen by using escape sequences। अच्छा, मैंने पहले जो है वो किया था, इसको कंपाइल नहीं किया था, अब इसको कंपाइल करके देखते हैं अच्छा कि क्या बीप साउंड जो है वो 3 दफा शो होगा, नहीं एक ही दफा आता है जी, बीप साउंड आपके पास एक ही दफा प्रोड्यूस होता है। 2 एस्केप सीक्वेंसेस मैंने आपको करवा दी हैं बच्चों, अब बाकी जो है उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। टैब वाला मैंने करवा दी जो मोस्टली यूज होता है, बैक स्लैश एन को हमने देख लिया है, बैक स्लैश ए को देख लिया है, और ये अभी बीच में एक एक जो है वो ऑलमोस्ट रह गया, तो उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है, एंड यू विल सी हाउ आउटपुट चेंजेस यूजिंग दीज एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। आपने ये खुद करना है काम, ठीक है। जो बीच बीच में से एक स्किप हुआ है उसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है बाय राइटिंग द प्रोग्राम, सिंपल प्रिंटफ स्टेटमेंट्स यूज होंगी, ओके। What is your home task? Write a program that displays your name, class and roll number separately. बहुत आसान है, इससे आसान मैं कहती हूँ कि आपको मिल ही नहीं सकता। जो पिछली क्लास में इवन जो होम टास्क मिला था, that would be a bit difficult if we compare both of these tasks. It is easier one, and what you have to use escape sequences, and your name, your class and roll number must be written in inverted commas। आपके पास आपका नाम, आपकी क्लास और रोल नंबर दोनों इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे होने चाहिए, और दोनों के बीच में दोनों नेक्स्ट लाइन पे लिखे होने चाहिए, और रोल नंबर का जो डेसिमल नंबर होता है, सॉरी जो कैरेक्टर्स होते हैं, फिर जो आगे इंटीजर नंबर होता है, उन दोनों के बीच में टैब लगा के आपने स्पेस भी देनी है, किसी क्लास के लिए भी, ठीक है।
तो ये स्केप सीक्वेंसेस वाली एक्टिविटी आपके पास आ गई। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वाली है उसको तो हम इस तरीके से प्रैक्टिस उसके नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज नॉट दैट इज अ कॉमन प्रैक्टिस एक्चुअली। तो वो हम आगे प्रोग्राम करेंगे तो उसमें यूज हो जाएगी, बट स्केप सीक्वेंसेस आपको आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बेसिकली मोस्टली इट इज इंक्लूडेड इन योर ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो आपको स्केप सीक्वेंसेस का पता होना चाहिए, और वो कैसे पता होगा, जब आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, हैव अ गुड डे अहेड। आई होप आप लोगों का टाइम अच्छा गुजर रहा होगा। मैडम की का लेक्चर सुन के भी आप लोग जो है वो कोशिश कर रहे होंगे कि अच्छा गुजरे। बेशक कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग आ गई है, तो कोई नहीं, उसको भी हमने गुजारना है, समझ के पढ़ के मिलजुल के हमने इसको भी करना है। हैव अ गुड डे अहेड, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।